Good morning, students. Sorry, there was one technical glitch, so we started 10 minutes late. Everyone, I hope you revised all entries of branch accounting. So now let's start with the branch accounting first. So in today's session, what we are going to see, stock and debtors method using stock invoice price. Okay, so we have completed till now at cost question number 1 by using debtors method and stock and debtors method. So today we are going to see the question using illustration number 6, debtors method and stock and debtors method. But what is the new in this question? This is cost plus 25%. Yes, today without wasting time, because we already spent बेटा 10 minutes extra. तो चलो अभी एक बार हम लोग कर लेते हैं आज की शुरुआत बाय यूजिंग दिस मेथड. चलो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 में. चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. से गुड मॉर्निंग इन द कमेंट सेक्शन. बेटा सब लोग लाइव आ चुके हो? यस. चलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आ गए क्या बेटा? जल्दी आ जाओ. चलो कमेंट सेक्शन में लिख दो गुड मॉर्निंग. यस, नितिन, मेलिना, प्रथम, संजना, तनीषा, मोनिका, नवनीत, मोनिका जी बेटा चलो गुड मॉर्निंग बेटा. हाउ आर यू सर? ठीक है बेटा, आज मेरी हालत जरी बरसों से बेटर है, बट ठीक है, सर्दी है अभी भी. ओके, चलिए. हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज ब्रांच इन कोची टू विच गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 25%. तो गुड्स कौन से प्राइस पे भेजे गए हैं? कॉस्ट प्लस 25%. अंडरलाइन 25%. चलो जल्दी जल्दी आ जाओ. Cost plus 25%. Yes. They sell goods both cash and credit. Underline cash and credit. Branch expenses are directly paid upon the head office. So यहाँ पे सबसे important, and branch has to remit all cash received to head office. It means, yes बेटा, what it means बेटा? चलो give it in the comment section. इसका मीनिंग क्या होता है? Branch has to remit all cash received to head office का मतलब क्या होता है? And branch expenses are directly paid from head office. ये तो दिया हुआ है. But what it means बेटा? Branch has to send all cash received to the head office. चलो जल्दी से बताओ. Yes. क्या मीनिंग है इसका? Branch does not maintain cash account. From the following details relating to calendar year, prepare the head office account and also ascertain the branch profit. Branch does not maintain any books of accounts but send. Yes बेटा, branch will not maintain cash account. ये इसका मीनिंग था. अभी branch does not maintain any books of accounts but sends weekly returns to the head office. चलो सबसे पहले लिखो बुक्स ऑफ हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई. बुक्स ऑफ हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई. कौन सा ब्रांच है आज? कोचिन ब्रांच अकाउंट. पर्टिकुलर्स रुपीज 3/4 पेज. 3/4 पेज ड्रॉ कीजिए. चलो 3/4 पेज ड्रॉ कीजिए फास्ट.
चलो बच्चा, कैसे सॉल्व करेंगे? यस, ध्यान दीजिए, बाद में यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. चलिए, सबसे पहले, हाँ, डू वन थिंग बेटा, प्रिपेयर दिस प्रोफॉर्मा इन योर नोटबुक. नहीं तो चलो लाइन बाय लाइन ही बनाते, इट्स ओके. राइट डाउन ओपनिंग बैलेंसेस, स्टॉक, डेटर्स. राइट डाउन ओपनिंग बैलेंसेस, स्टॉक एंड डेटर्स. ठीक है, स्टॉक एंड डेटर्स. स्टॉक एंड डेटर्स. हाँ, चलो. Goods received from head office rupees 6 lakhs. So to GSTB branch, after writing opening balances, write down to GSTB branch. What you are going to write over here? 6 lakhs. 6 lakhs. And remember, opposite to that, you always write loading. Opposite to that, write down loading. On the opposite same line, actually मैंने same line पे नहीं किया है, but you have to write it on the same line. Now how to calculate loading? 6 lakhs into GSTB loading है ये. Goods are sent at 25% extra, so 25 upon 125, so 1,20,000. It is 1,20,000. ठीक है? So loading you have to write it on the opposite side. But till now over. And second one, after that, yes, returns to head office 12,000. So return GSTB return 12,000, and opposite to that, exactly opposite to that, debit side to GSTB return loading. To GSTB return loading 12,000 into 25 upon 125. See, loading has to be cancelled on the opposite side. क्या याद रखना है? Loading has to be cancelled on the opposite side. ठीक है? So this is 2,400. 2,400. Have you done till now? चलो बताओ, अभी तक का क्लियर हुआ क्या? Yes, any difficulty? GSTB loading, opening balances आपने लिख के छोड़ दिए. Tell me over in the comment section. GSTB लिखा, GSTB का लोडिंग अपोजिट साइड पे कैंसिल किया. सो व्हाट इज लोडिंग? लोडिंग मींस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. दैट्स वन कॉन्सेप्ट. So that's one concept. I'm not going to explain it now. You're already aware about that. So loading has to be cancelled on the opposite side. इतना याद रखिए. Loading आपको opposite side पे cancel करना है. Any difficulty? Any difficulty? No. चलो आगे. Sales. Now you only tell me that stock दिया है. Sorry, stock is 60,000. So opening stock है ये. Write down 60,000, and opposite to, exactly opposite of that, 60,000 into 25 upon 125, 12,000.
12,000. लोडिंग हैज टू बी कैंसल. तो लोडिंग किसके ऊपर कैंसल किया? लोडिंग हमने अभी तक किसके ऊपर किया? कैलकुलेट स्टॉक ओपनिंग, जीएसटीबी एंड जीएसटीबी रिटर्न. ओके, सो 100 पेजेस के नोटबुक में ये लिखना है जीएसटीबी रिटर्न. इसके ऊपर हमने लोडिंग कैंसल किया, बाद में लिखते हैं. ओके, चलिए सेल्स. नाउ यू टेल मी, सेल्स का एंट्री हम लोग क्या करते हैं डेटर्स मेथड में? डेटर्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं? टेल मी. मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. सेल्स की एंट्री क्या होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. सेल्स का एंट्री क्या होगा? ब्रांच टॉपिक आप लोग और मुझे दोनों को मिलके अच्छे से करना पड़ेगा. दिस चैप्टर इज नॉट वेरी इजी चैप्टर. तो सेल्स की एंट्री बोलो. नो एंट्री. इसने लिखा रहे ओनली कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड. जानवी, नहीं मोनिका. बेटा मोनिका, सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड बाय ब्रांच. चलो छोड़ो. सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग बैलेंस 72,000. सन्ड्री डेटर्स का याद रखो 72,000 ओपनिंग बैलेंस. लोडिंग कैंसल करते हैं क्या? अरे सर डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर कौन लोडिंग कैंसल करेगा? सो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स 72,000. ठीक है. नेक्स्ट, सेल्स का कुछ नहीं करेंगे, सेल्स का एंट्री नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज लाइन बाय लाइन चल रहे हो. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सो कैश टू डेटर्स. ओके, एचओ कुछ नहीं करेगा. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, एचओ कुछ नहीं करेगा. बैड डेट्स टू डेटर्स, एचओ कुछ नहीं करेगा. सेल्स रिटर्न टू कोचिन ब्रांच, एचओ कुछ नहीं करेगा. ओके सर, एचओ क्या करने वाला है बाद में देखेंगे. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, salaries, wages, office expenses, expenses of branch paid by HO. So कौन पे करेगा? HO. ऊपर दिया था expenses are directly paid from HO. ऊपर लाइन दिया हुआ है expenses of branch paid by HO. क्या एंट्री करेगा HO? HO क्या एंट्री करेगा? HO एंट्री करेगा ब्रांच टू कैश, ब्रांच टू कैश. और तीनों को लिख दो. रेंट 18, 60 एंड 6. नॉर्मल पेन से लिखो 18, 60 एंड 6. ओके सर. एंड क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग बैलेंस. स्टॉक डेटर्स के लिए वर्किंग नोट 1, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट. स्टॉक કેટલો છે? 1,20,000, 1,20,000. So we are going to write on the opposite side 25 upon 125. Loading. What is loading? 24,000. Loading लिखो. And remember, red pay by cash. Daily cash is remitted to HO.
So here what is hidden entry? So branch has to maintain remit all cash. Now which cash? Cash sales and collection from debtors. ये दो माध्यम है. These are two sources of cash. Okay. So cash sales plus collection from debtors कितना आया देखो. Cash sales plus collection from debtors. It's very simple. Cash sales is 2 lakhs and collection from debtors is 3,20,000. 3,20,000. 5,20,000. Now I am giving you time to calculate debtors balance. चलो डेटर्स का बैलेंस मुझे मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाइए एंड टेल मी डेटर्स बैलेंस. चलो जल्दी से बताओ. यस डेटर्स का बैलेंस जल्दी से बताओ. चलो जल्दी से डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बताओ फास्ट. कमेंट सेक्शन में ओपन डेटर्स अकाउंट. ओपन डेटर्स अकाउंट बेटा चलो जल्दी जल्दी. चलो प्रोफॉर्मा मैं आपके सामने रखता हूं. यू ओनली टेल मी. डोंट रीड प्रोफॉर्मा टिल लास्ट मिनट. नहीं समझा तो देखो. क्या हुआ रे बेटा आंसर. What is the closing balance of debtors? You all are getting 94,000. Yes, correct. 72,000 balance brought down. 3,60,000. Bad debts is 4,000. Cash 3,20,000.
discount 6,000, sales return 8,000, and 94,000 is your buy balance carried down. And now you can calculate profit. So every one of you now write it in the comment section where you were go wrong. Okay. So everyone has to write कि मैं कहां पे गलत गया था. चलो. So 94,000 is the correct answer. चलो जल्दी से लिखो. Calculate net profit बेटा. What is the net profit? और आप लोग कहां कहां गलत गए वो लिखो कमेंट सेक्शन में. $35,600 is a profit. You can take a screenshot. कहाँ कहाँ पे गलत गए ये बताओ. चलो बेटा जल्दी जल्दी. वेरी गुड. टू सेल्स ओनली क्रेडिट सेल्स ही लिखना था. चलो नेट प्रॉफिट इज 35,600 और जहां जहां गलत हो गए वो लिखो ताकि आपको याद भी हो जाएगा बाद में. यू विल नेवर गो रॉन्ग. तो जितने भी बच्चे रॉन्ग लिखे हैं जल्दी से लिख लो. नितिन शुक्ला तेरा गलत गया था बेटा. तूने कुछ तो गलत एंट्री पास की थी. मॉर्निंग में जो लोग उठते नहीं है. यस. अरे डेटर्स अकाउंट में महेश ये क्या क्वेश्चन है. डेटर्स अकाउंट में कैश सेल्स रिकॉर्ड होता है क्या डेटर्स अकाउंट में. चलो 100 पेजेस के बुक में ये लिख लो. क्लोजिंग स्टॉक पे भी लोडिंग कैंसिल होएगा. चलिए नाउ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. चलो टेक स्क्रीनशॉट and see I will show you the method of stock and debtors and then we'll give you 5 to 10 minutes. 10 minutes दूंगा आपको to note down all these points. First understand it. Don't copy it now. I will give you proper time. चलो see now stock and debtors method. First you will open stock account of 10 lines. Then you will open branch debtors account 6 lines, 6 to 7 lines. Branch cash account actually no need, only for understanding purpose. Branch adjustment account you are going to open for
5 to 6 lines. So this is new account. This is new account. Why this is open? To cancel loading. To cancel loading. So branch stock and branch adjustment are interdependent account. Branch expenses will be the next account of 5 lines, and last account is branch P&L. Last account is branch P&L. ठीक है, एकदम इजी है. चलो अभी पोस्टिंग करेगा. सो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू राइट? ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स. Of stock and debtors. Try to understand. Don't write anything. All accounts you have to open first. How many accounts you open, beta? 5. Expense and branch P&L is 6. So what is new account over here? Branch. Yes, beta. Adjustment account. Adjustment means cancellation of loading. So सबसे पहले तो मैं opening balance लिखेगा 60,000 opening stock and debtors 72,000. 60,000 to opening stock, and immediately you have to cancel loading. Branch adjustment, opening stock ka loading by balance brought down. 60,000 divided into 25 upon 125. So how many beta? Zero. Yes, ये कितना आएगा बेटा? 12,000. Next one, GSTB. Sorry. Debtors 72,000. Next, goods received from head office means branch stock is increasing 6 lakhs. Remember, stock is increasing. HO account we have not prepared. So what is the entry? Goods received from branch head office means GSTB to HO. And GSTB we will add it in the branch stock. Okay. So अभी branch के एंगल से सोचना है. Branch के एंगल से goods stock बढ़ गया. And 6 lakhs into 25 upon 125. 1,20,000. 60,000. Sales. Better debtors to sales and cash to sales. अच्छा रिटर्न्स, पहले रिटर्न्स आएगा. सो रिटर्न्स बेटा 12,000 returns by GSTB returns and 12,000 loading on GSTB returns. 2,400. Loading has to be cancelled. Beta, please understand first sales, cash sales. Now what is the entry from branch angle? Cash to sales. So cash account का debit में 2 लाख and sales means goods goes out, inner column 2 lakhs. 2 lakhs cash sales. Similarly credit sales 3,20,000. Debtors के debit में 3,20,000. This is debtors account. 3,20,000. Next one is, sorry, 3,60,000. Sorry, it's my mistake. 3,60,000. 360. So total sales is 5,60,000. Next one, beta. Debtors opening balance we already written. Cash received from debtors. So by cash 3,20,000 and cash के debit में 3,20,000 and daily cash is remitted, so 5,20,000. So here we have finished with branch cash. Daily cash is remitted. Discount allowed and bad debts. P&L के debit में, P&L के debit में discount second line and bad debts.
6,000 and 4,000. And debtors credit ला bad debts and discount allowed 6,000 4,000. सेल्स रिटर्न बेटा 8,000 एंड सेल्स रिटर्न स्टॉक में से भी लेस करूंगा डेटर्स के क्रेडिट में डेटर्स के क्रेडिट में डेटर्स के क्रेडिट में ओके 5,52,000. Expenses paid. So expenses to HO. HO we have not opened. 1860 and 6. तो expenses के डेबिट में 1860 and 6,000. See, one by one account we have to open. बस हो गया. And last one, closing stock 1,20,000. And what is loading on this? Sorry, this is not the correct answer. Stock में 1,20,000. And second effect, loading का loading 1,20,000 into 25 upon 125. So this is 24,000. Now I'm not going to help you out. I told you all posting part. Okay. So you just take a screenshot and now closing. First you do the posting and tell me over in the comment section. After writing this beta, I will go further. I will close all accounts. Now you have to do it by your own. I will give you exactly 10 minutes. Take a screenshot. Take screenshot. Take a screenshot beta. Debtors account and cash account. Take a screenshot. You do first posting part finish. Finish your posting part and then we'll start with this is fourth account, fifth account. P&L. So friends, now I will give you exact 10 minutes to finish all these accounts. चलो 10 minutes देता हूं. You have screenshots बेटा. चलो start करो. 10 मिनट में पूरा अकाउंट्स कंप्लीट करो and tell me over in the comment section. Then we will do closing part. चलो लिखो.
3 minutes to go. 3 minutes to go. One minute. Branch adjustment account is open to cancel unrealized profit. In debtors method, we will cancel on the opposite side, but in stock and debtors method, we cancel it in the separate account. Sanjana ji, logic is very simple. Acha, Bhumika got net profit also. Very good, beta. See, branch adjustment account. Branch adjustment account, why we are opening, beta? To cancel unrealized profit. Correct है? और कोई? Yes, beta, over. So you understood why we open, beta, branch stock. See, I will take a revision also, so don't worry. But you have to write it by your own way. एग्जाम में मैं नहीं आने वाला हूं आपको हेल्प के लिए. तो branch stock account, why it is open? Branch debtors account. So everyone see, when I teach in face-to-face batches or when we have sufficient time, I always tell students to first solve it. यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन का माध्यम ये हमारा मैसेज पे होता है, तो ऐसा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम में बोल वे सॉल्विंग वे इज सिमिलर टू माय फेस टू फेस बैचेस और माय जूम बैचेस. तो ये मुझे नहीं लगता है कि भाई आप लोगों को इतना दिक्कत आना चाहिए. नाउ यू ओनली टेल मी. Yes, one by one account I will show. Yes, every one of you. Branch stock account.
व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? चलो बताइए फास्ट, एक एक अकाउंट क्लोज करेंगे। चलो बैलेंसिंग फिगर क्या आया बताओ फास्ट। ब्रांच जैसा टॉपिक आप लोग लाइव में अटेंड नहीं करोगे तो मुश्किल है। चलो बताओ बेटा, फास्ट बताओ कितना आया। थोड़ा माइक के सेल बदल देता हूं मैं, एक ही मिनट। चलो बोलिए कितना आया बैलेंसिंग फिगर। यस कितना आया बेटा बैलेंसिंग फिगर? You are getting the answer 24,000. So total is 6,84,000. Correct है? 6,84,000. 24,000 is called as excess selling price over invoice price. Now remember 100 पेजेस के बुक में लिखो स्टॉक एंड डेटर्स at invoice price. Write down 100 पेजेस के बुक में stock and debtors at invoice price, branch stock account, if credit is more than debit, it is called as beta excess selling price over invoice price. And if debit is more than credit, it is beta loss by dash 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 by might be fire, by theft. Okay, so loss by if debit is more than credit. See, so this is how you have to understand. स्टॉक का क्रेडिट ज्यादा है इसका मतलब सी दिस इज एट इनवॉइस प्राइस. व्हाई दिस इज इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस GST be written at invoice price and this is at selling price. Closing stock again invoice price. So selling price over invoice price. What it called as selling price over invoice price. Remember, why logic is very simple. All other things are recorded at invoice price. Only sales is recorded at selling price. लॉजिक समझ में आया क्या? लॉजिक इज वेरी सिंपल कि सभी चीजें जो है ये हमारी रिकॉर्ड हुई है सेलिंग प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, एक्सेप्ट सेल जो हमने कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड किया? सेलिंग प्राइस. इजी छे. आगे इसको बोलते एक्सेस सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस. लिख लिया क्या? ठीक है. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों ओपन किया? टू कैंसल लोडिंग. एंड बैलेंसिंग फिगर इसकी, इसको हम लोग बोलते जीपी. क्या बोलते बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, एकदम इजी. ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलते जीपी. 100 पेजेस के बुक में लिख के रखना. ठीक है बेटा. ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यस आई विल टेक अ रिवीजन, डोंट वरी बेटा कृष्णा. ठीक है. सो इसको हमने स्टॉक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर एक्सेस सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस बोला. नेक्स्ट वन डेटर्स को. अच्छा इसको मैं डाल दूंगा बेटा नंबर बी.
ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, नंबर बी ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में 24,000 बाय ब्रांच स्टॉक. यू कैन राइट बाय ब्रांच स्टॉक अपोजिट ऑफ ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट डेबिट में, ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में. व्हाट इज बेटा द फिगर इज कॉल्ड एज एक्सेस सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस. ठीक है, चलिए आगे. डेटर्स, डेटर्स सब कुछ था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है देखो. टेल मी डेटर्स की बैलेंसिंग फिगर. See whether you are getting the same answer or not. If not, beta rectify your answer. Spoon feeding नहीं करूंगा मैं. See debtors you are getting 94,000 or not. Yes. Debtors same balance दे रहा है क्या? बेटा इनवॉइस प्राइस, सी बेटा इनवॉइस प्राइस इज 100 का माल 125 में भेजा. दिस इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस माइट बी 140. सो दिस डिफरेंस is called as excess selling price over invoice price. 15 रुपया इसको बोलते हैं excess selling price over invoice price. 15 rupees. Now you got this concept. So this is cost, this is IP and selling price is over invoice price. ठीक है, चलिए नंबर 3. yes, cash we will close it. Number D. Now this is called as beta gross profit. This is a balancing figure. Calculate this. Branch adjustment का balancing figure. What is the balancing figure? Tell me gross profit का balancing figure. What you are getting? बेटा posting you have to do by your own. पोस्टिंग आपको खुद से ही करना पड़ेगा. कितना आएगा बताओ? 129,600. 129,600 एंड P&L के क्रेडिट में this is gross profit. $129,600. F 18 plus 6 plus 6 84,000. 84,000 F G 55,600. and we tallied at 55, sorry, कितना आया रे? 129.6 minus 84 minus 10, 35,600. sorry, 35,600. G. ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस कैरिड डाउन लिखो या टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिखो या टू स्टॉक रिजर्व लिखो. स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू राइट बैलेंस कैरिड डाउन यू कैन राइट इट एज बेटा स्टॉक रिजर्व. ये क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व है बेटा. यस. G is 35,600. C 1 by 1 अकाउंट क्लोज कीजिए. ठीक है, अभी मैं एग्जाम के स्पीड से आपको ये सॉल्व करके बताता हूं. एग्जाम के स्पीड से मैं कितने मिनट में सॉल्व करूंगा. ठीक है, चलो एक बार सेम क्वेश्चन
Only to have grip over this question, I am taking it once again. Stock and debtors. Debtors method में you will write on the opposite side. Okay. Now 10 minutes में मैं कैसे एग्जाम में सॉल्व करूंगा, सिर्फ देखिए, सिर्फ देखिए. Yes. बेटा, when you are doing it for the first time, you might feel कि these questions are difficult one. Okay, ये सभी बच्चों को लगता है. देखो, ध्यान देके सुनना अभी. Method, stock and debtors. Branch stock, branch adjustment. Okay. Branch debtors. I won't open branch cash. Branch expense in exam. And last account, branch P&L. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को सामने रखता हूं. 1 मिनट में मेरा ड्रॉ हो गया है. चलो, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस के पहले आई विल राइट टू ओपनिंग स्टॉक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके. टू जीएसटीबी 6 lakhs. टू जीएसटीबी 6 lakhs. जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं टिक करते जाऊंगा. इन एग्जाम आई विल डू टिक्स. 6 lakhs. Immediately buy GSTB loading 6 lakhs into 25 upon 125. 1,20,000. Buy GSTB return loading. लोडिंग नहीं, इधर एक लाइन रहेगा या सिर्फ. ओके. बाय जीएसटीबी रिटर्न 12,000 loading on the debit side. To GSTB return loading 12,000 into 25 upon 125, 2,400. Next, stock. Stock beta where to write? Branch stock में 60,000.
60,000 and branch adjustment में buy balance brought down, or you can write by stock reserve or by stock reserve, both are correct. 60,000, 12,000. Next, sales. Buy sales, cash, credit, less returns. Cash sales કેટલો છે? 2 lakhs. And credit sale 3,60,000. Now what is the entry? Cash to sales. Stock में लिख दिया sales, cash account is not open. And credit sales debtors account में 3,60,000. Sundry debtors opening balance 72,000. 72,000. Cash received from debtors. So by cash, second effect is not done because daily cash is remitted. So cash account की जरूरत नहीं है. 3,20,000. Discount allowed. Discount allowed to debtors. So by discount and by bad debts together, and both are we are going to write it in 6 and 4, and even by sales return is there. So all three effects we have to give one by one. Sales return is 8,000 and discount is 6 and 4. 6,000, 4,000, returns 8,000. करेक्ट है बेटा? P&L के डेबिट में second line to discount to bad debts. 6,000, 4,000 and returns already over. Next, 18, 60 and 6 branch expenses. 18, 60 and 6. 2 rent rates taxes. 2 salary wages. And 2 office expense. 18, 60 and 6. Okay, over. And then stock, by closing stock 1,20,000. To stock reserve, loading on this on branch adjustment debit side, opposite side on the debit side 24,000. करेक्ट है? ओवर. नाउ बेटा वन बाय वन अकाउंट क्लोज करेंगे. सो 8 मिनट 3 सेकंड्स में पूरा पोस्टिंग हुआ. नाउ वन बाय वन क्लोज योर अकाउंट. To branch adjustment account, excess selling price over invoice price. It's a balancing figure. 200. 5,52,000. 6,84,000. 24,000. ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच स्टॉक 24,000. Then I will calculate GP.
24 plus 120 plus 12, 156 minus 24 minus 2.4, 129,600 to branch P&L के क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट जीपी 129,600 4,32,000 minus 320 minus 10 minus 8, 94,000 ब्रांच एक्सपेंसेस P&L में जाएंगे 84,000 and to net profit 35,600. Ten minutes 38 seconds, beta. 35,600. I am getting the profit. See how to solve this question. I have shown you how to solve this question by using tick-tick-ji technique. Yes, beta. Now it's simple. Now it's simple. Every one of you. अभी समझ में आया क्या नहीं आया? अरे बेटा अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ, वैसे नहीं आया आया कुछ तो बोलो. प्लीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, ऑप्शन नहीं है. ब्रांच अकाउंट्स में बहुत प्रैक्टिस. अभी आपका 50% सिलेबस खत्म होने को आया सर. We completed investment account. We completed beta redemption of debentures, redemption of preference shares, bonus shares. If you are not revising it properly, you are not going to recall anything. Recalling हमारा रोज 8 से 8:30. मेरे जो स्टूडेंट्स है देखो, नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लासेस ऑन फेस टू फेस. हम लोग जूम पे जुड़ जाते हैं. नाउ कोरोना ये पूरा का पूरा आपको समझ गया होगा. In corona beta, now virtual classes, yes, it will save your time. फेस टू फेस में कुछ नहीं, उधर आने जाने में टाइम जाता है. इफ यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड तो आपको यश मिलने वाला है. ओके, यू विल गेट द सक्सेस डेफिनेटली. ठीक है. सो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, इतना याद रखिए. जब आपके विचार ये बहुत ज्यादा आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट होता है, तो बेटा आपके माइंड को कंट्रोल करने का एक बेसिक टेक्निक आपको बताता हूं. मेडिटेशन में ये सिखाया जाता है. आई एम नॉट बेटा फॉलोअर ऑफ एनी मेडिटेशन के ये, बट आवर बेटा माइंड when we start our studying beta, whenever we start our study beta, you have n number of thoughts in your mind. है क्या नहीं है ये बताइए. Tell me it in comment section. Everyone is not 100% focused. Yes, how many of you can focus 100% sir on your explanation? We never get any thought regarding ki this chapter is very simple or I have remaining balance with beta. Now costing sections are not all started. फिर मैं टैक्स का कैसे करूंगा, लॉ का कैसे करूंगा. जब भी आप मेरे लेक्चर को बैठते हो, आज मुझे 100% बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू focus only on my explanation? Yes, tell me truth, then only I can save you. मुझे truth चाहिए. Yes sir, I can focus 100%. ठीक है. सुरभि बोल रही है लॉट ऑफ थॉट्स ड्यूरिंग स्टडीज. ओके बेटा सुरभि जी, ठीक है. Yes, Tanisha, without practice, yes, you are not going to understand it. Ha, other students, beta. How many of you have thoughts? Yes, and how many of you can focus 100%? कितने बच्चे हैं?
कांचन बोल रही है 100% थॉट्स नहीं आते, राजीव कुमार बोलता है नहीं आते, मोनिका बोल रहे सर यस वी हैव मेनी थॉट्स इन आवर माइंड, कृष्णा बोल रहा है सर कभी कभी थॉट्स आ जाते हैं माइंड में, राजेश नो सर आई हैव मेनी थॉट्स, नो सर यू आर ट्रू, तुषार बोल रहा है, सुरभि बोल रहे हैं लॉट ऑफ थॉट्स, महेश भी वही बोल रहा है यस सर why you are getting distracted, you know, don't behave, beta you have to behave like eagle, 100% फोकस जो भी उसकी शिकार है उसके ऊपर रहता है। एंड सी व्हेन आई एम इन द टीचिंग प्रोफेशन अंडरस्टैंड, सो whenever I want to explain any concept I will never have any other things will come to my mind, no never, my 100% focus is on teaching। सपोज मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूं एंड सपोज मेरा माइंड है कि यस नाउ टुडे व्हाट आई विल डू विथ माय क्लाइंट, टुडे हाउ टू इंक्रीज माय रेवेन्यू, टुडे हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दिस न्यू क्लाइंट, नेवर बेटा। सो जब भी टीचिंग में होता हूं तो माय फोकस हाउ 100% concept will come, yes I will teach in the same way, but how students will understand this concept, that is the thing, ये मेरे माइंड में चलता रहता है, फोकस ओनली ऑन माय टीचिंग। सेकंड वन, व्हेन बेटा नॉट लाइकिंग एनीथिंग, फॉर एग्जांपल सपोज मैं जब फ्री बैठा रहता हूं और मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता है, दिन भर कुछ ना कुछ चलना चाहिए, तो बेटा मेरे मन में 100 विचार आते हैं, इतना याद रखिए, और वही विचारों से आपको सपोज मुक्ति चाहिए। सो बेटा फर्स्ट थिंग यू फोकस ऑन यूर यस, जो भी आपका श्वास है, यूर ब्रीदिंग, यू फोकस ऑन दैट, ये मेडिटेशन विल टीच यू। ओके सो मेडिटेशन आई एम नॉट सेइंग यू डू दिस मेडिटेशन, फर्स्ट थिंग एक तो डेवलप यूर लाइकिंग इन द सब्जेक्ट, सो यूर माइंड बेटा व्हेन यू आर प्लेइंग समथिंग your 100% focus is on that game. Suppose if you like to watch any program example, so your 100% is in that program, but beta when it comes to your study, why you are not developing your liking in the study, why you don't understand that these only 5 to 6 years you have to devote for this study, and one small step will give you the success, it's not one day success बेटा, कोई नहीं है, it's marathon batch, और ये जो होता है ना it's only a publicity part, no one can give you within 8 hours, I can challenge you, ha marathon by Sanket sir, if you learn all concepts from Sanket sir then it will help you out, otherwise marathon from Sanket sir, you are studying from Sanket sir, you are watching marathon of another faculty, it is not going to help you out। सो ये सीए फील्ड में तो छोड़ दो, जो भी आपको बोल रहे हैं ना कि मैं महीने भर में आपको क्लियर कर दूंगा ऑल 4 सब्जेक्ट्स, नो नेवर, इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट। ओके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बेटा दे ऑलरेडी हैव दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 100 पेजेस की बुक करेगा, इंडेक्स बनाएगा, सब कुछ ही विल डू इट इन द प्रॉपर वे, और माइंड में से आपको जब भी ये कॉन्सेप्ट आते हैं कि यार मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, अभी नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट फोकस कि सर ने क्या किया, सर ओपन स्टॉक अकाउंट, सर ओपन डेटर्स अकाउंट, सर ओपन expense account, sir open branch adjustment account, here what is the new concept in this question, that branch adjustment account is a new concept, then branch expense and then branch P&L, after class you never sit for 15 minutes, this is your problem, after class you have another thoughts, now while studying accounts why in your mind some other chapters, or sir मैं पढ़ाई के बारे में ही सोचता हूं, बेटा फोकस जो चल रहा है उसी सब्जेक्ट पे देखना, छोटी सी स्टोरी बताता हूं इन हिंदी, बेटा
स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ ऑलवेज। एक स्टोरी बताता हूं हिंदी में, सबको पता होगी ये स्टोरी, आप लोगों ने ये इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। दो साधु थे, भिक्षुक। डू यू नो भिक्षुक क्या होता है? वो दीक्षा लेते हैं। सो बेटा एक दिन हुआ क्या, वो 10-12 साल से उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की थी, बहुत ज्यादा तपस्या की थी। और एक बार वो भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गए। बारिश हुआ, बहुत तेज बारिश हुआ। ये जो 10 साल से जो झुग्गी में रह रहे थे, उनके ये जो भी हम लोग स्मॉल हट बोल सकते हैं, वहां पे वो रह रहे थे एट दैट टाइम, कि वो पूरा झुग्गी में से आधा झुग्गी उड़ गया। अभी आधा खराब हो गया, आधा रह गया। सो ये स्टोरी पे कंक्लूजन क्या था? एक भिक्षुक आया, उसने बोला ये भगवान मैं तेरी 10 साल से तपस्या कर रहा हूं, तूने मेरी झुग्गी को बर्बाद कर दिया। मैंने इतना तेरा ये करने के बाद, तपस्या करने के बाद। दूसरा आया, वो क्या बोला कि तेरे झुग्गी में यस मुझे आधा झुग्गी तो भी तूने दिया। ये पॉजिटिव माइंड है, और इसी को तो आपको जनरेट करना है। वेनेवर डोंट थिंक ऑफ अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स। ये भी ध्यान में रखो, आप अकेले हो, आपका स्टाइल ऑफ टीचिंग अलग है, स्टाइल ऑफ लर्निंग अलग है, ये ध्यान में रखना। सपोज आपका सीनियर बोलता है तू ये बुक पढ़, नो, I will learn from this study material. If I'm getting fail also, I will learn from study material and past examination questions. Many of students, they always ask me, sir, I get flunk in the first exam. Are beta, how much time you have devoted for each subject? You solve it for 3 to 4 times. And suppose you don't change your strategies. बेटा जब भी मैं भी failure देखा है, but बेटा whenever I failed, एक ही बार हुआ, but I have never changed my strategy. चलो अभी ये बुक लेता हूं, no, सेम बुक, सेम स्टडी मटेरियल, सेम स्कैनर क्वेश्चन, बस सफिशिएंट है। ये फैकल्टी ने नया क्वेश्चन दे दिया, मैं वो सॉल्व करता हूं। अरे मत करो, मत करो, स्टडी मटेरियल करो, 100% हो जाएगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, टेक रिवीजन, डू रिवीजन। अभी कैसा होगा? नाउ रिवीजन, हाउ टू डू सर? रिवीजन कैसे करने का सर? देखो, नाउ when I read this question, so I already understand कि 50% of the question, yes beta, I already understood it. Now the question is of that remaining 50%. अभी डेटर्स मेथड, सर फर्स्ट आई विल रीड, सर ने क्या बताया था? दिस क्वेश्चन इज ऑफ 25%, मींस लोडिंग। लोडिंग के बारे में क्या बताया था? डेटर्स मेथड, सर ने बताया था देयर आर टू मेथड्स। डेटर्स मेथड में थिंक फ्रॉम द एचओ एंगल, एचओ के एंगल से सोचना है। स्टॉक एंड डेटर मेथड में थिंक फ्रॉम द ब्रांच एंगल। ओके सर, आई अंडरस्टूड इट। थिंक फ्रॉम द एचओ एंगल में आपने क्या बताया था? हाँ, एचओ के एंगल से करना है तो हमें क्या सोचना चाहिए? एचओ के एंगल से करना है तो लोडिंग हैज टू बी ऑन दी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड पे लोडिंग कैंसल करो। यस सर, अंडरस्टूड। सर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में सेपरेट अकाउंट इज ओपन, ब्रांच एडजस्टमेंट। हाँ सर, नाउ प्लीज गिव 100% फोकस। अभी पूरा फोकस संकेत सर पे रहने दो, 100% फोकस अभी, ठीक है? यस, अभी माइंड में से सभी चीजों को निकाल दो। यू आर हियर ओनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो पूरा फोकस करना। डोंट थिंक मुझे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा, सबको आने वाला है। एवरीवन विल गेट द आंसर, डोंट वरी। मैं 5 मिनट में पूरा जादू कर दूंगा, मिरेकल हो जाएगा। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन बेटा आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स। नाउ प्लीज फोकस, ठीक है? ऑल आर रेडी बेटा? यस, गिव मी इट इन कमेंट सेक्शन, सर रेडी रेडी रेडी। यस, रेडी है सब? हाँ। फर्स्ट वन, सर आज 10 मिनट्स लेट हुआ था, टुडे नो ब्रेक सर। सी, रेडी है सब? चलो, डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड स्टार्टिंग से देखते हैं। डेटर्स मेथड में सर ने क्या सिखाया था? थिंक फ्रॉम एचओ एंगल। हाँ, याद आया। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में थिंक फ्रॉम ब्रांच एंगल, ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
Yes, sir. Now, debtors method beta, and always tell to yourself, it's very simple, it's very simple, it's very simple. HOK books hai, but we are going to open branch account. Yes, sir. And sir, memorandum accounts. Why? To know the closing balance or for cross tally purpose. Closing balance के लिए. Today I'm going to teach you one more easy concept, that is a foreign branch. Don't worry. Closing balance. Okay. Branch account. Memorandum account. See, okay. Now, branch के angle से. So one by one entry. Sir, which entry we are not passing here in the debtors method? Sir, cash sales, credit sales, that 10 entries, bad debts, discount. So why, sir? Are branch is doing that activity, na? Cash sale, who is going to sell? Branch. HO ka no role. Credit sales, no role. Then bad debts, no role. Sales return, no role. Discount allowed, no role. Sir, cash remitted? Yes. Cash remitted to HO. Now there is two types of accounts. Either branch will maintain cash because branch has to incur some expenditure. See, suppose दक्ष मेरा बेटा ऑफिशियल पर्सन मेरा, हाँ. सो दक्ष को जब सभी जरूरतें, इफ ऑल नीड्स ऑफ दक्ष आर फुलफिल्ड बाय either Mona madam or Sanket sir, then why beta there is no need to maintain any cash with Daksh up to 7th standard. But beta after 7th standard, Daksh also has some own expenditure. Daksh is our branch. So in that case, we will give some cash to Daksh, na? So Daksh has either, there are two options branch ke liye bhi. So branch also has two options. Expenses will paid by HO. Pay HO, you pay our expenses. Daily cash we will remit you. So daily cash kahan se aayega? Either cash sales or collection from debtors. Sir, our own expenditure? No, HO will pay. So there is no need to maintain cash account. Okay. So cash account in question itself, there are better two ways which are given in the question. Either no need to maintain. Why no need to maintain? Daily cash sent, daily cash sent, and expenses paid by HO. So there is no need to maintain cash. Sir, when to maintain cash? If expenses are also paid by, partly expenses paid by HO and partly by branch. Yes, sir. Then we are going to maintain cash account. Easy. एकदम easy है सर. कैश अकाउंट कब मेंटेन करेगा? अरे सर दो तो ऑप्शंस है सर. No need to maintain cash. Daily cash is sent to HO and expenses are paid by HO. So we do not have to maintain cash. Sir, if expenses are paid by branch also, then we will maintain cash account, na? Then we will maintain cash account. Otherwise, there is no need to maintain cash account, sir. आया समझ में? आज थोड़ी गले में खिचखिच है. Okay. सर, डेली कैश तो हमने भेज दिया, एकदम इजी है. अभी क्वेश्चन इज, सर डेली कैश के बाद क्या? Now closing balances we have to find out. Then we will think from the angle of memorandum accounts, think from the angle of branch, point of view of branch, here point of view of HO. खत्म. Loading on the opposite side. किसके ऊपर लोडिंग आएगा? ओपनिंग स्टॉक, जीएसटीबी, जीएसटीबी रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक. अभी एक एक लाइन लिया. नाउ while revising, yes sir, debtors methods easy. Goods received from head office. So HO के angle से, HO के angle से entry will be goods goes out. Branch is a debtor. So branch to GSTB, branch के डेबिट में आएगा. So इधर मैं लिखूंगा debtors method, इधर मैं लिखूंगा debtors. तो इसकी एंट्री आएगी डेबिट GSTB, debtors method. इधर लिखता हूँ stock and debtors afterwards. This is how you have to revise. Immediately cancel loading. Loading किसके ऊपर आएगा? Loading आएगा, इधर लोडिंग क्रेडिट में आएगा. Return to head office, credit in branch account.
and loading on the debit side. Stock, debit balance, opening stock, we have to write opening stock, and whenever opening stock loading has to be cancelled on the opposite side, credit side, in the same account. Sales, we are not concerned. Debtors, yes, we are concerned. Opening, debit. Cash received from debtors, no, we are not concerned. Discount allowed to debtor, we are not concerned. Bad debt, we are not concerned. Sales return, we are not concerned. Rent, now payment is made by HO, we are concerned. Okay, so what is the entry? Branch to cash, debit, debit, debit. Branch to cash में तीनों का total. Stock, credit, loading, debit. Sir, one hidden entry. Hidden entry. Which is the hidden entry? Daily cash sale. Cash plus collection from debtors. Cash sales plus collection from debtors we will send to head office. So this is the hidden entry. Cash account debit to HO. Cash account debit to branch. Over. And then balancing figure. Closing balance we will open memorandum debtors account, and balancing figure will be the net profit 35,600. Simple. Sir, लॉजिक बैठना पड़ेगा 10 मिनट. यू हैव टू थिंक फॉर द लॉजिक. ठीक है, एवरी कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर. Suppose if any amount you are not getting, write down this by pencil somewhere. Yes, I got this answer wrong here. Here yes, I went wrong. You have to note down it somewhere. This is how CS student is doing homework and all self study. See, कितना भी सिखाया. So ultimately, I will show you the way. But ultimately, बेटा युद्ध तो आप ही को जीतना है. I will be like Krishna, you are Arjuna. मैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाने वाला हूं कि रास्ता फॉलो नहीं करना है तो बेटा फिर बन जाओ. क्या बन जाओगे फिर? कौरव. इतना याद रखिए. ठीक है, फिर रास्ता दिखाया तो फॉलो तो करना पड़ेगा. ओके सर, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड क्या रास्ता बताया सर ने? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में यस वी आर थिंकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ ब्रांच. तो ब्रांच के एंगल से नाउ थिंक गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस. व्हाट इज द एंट्री? जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस. जीएसटीबी विल इंक्रीज माय ब्रांच स्टॉक. तो ब्रांच स्टॉक के डेबिट में टू एचओ, वी आर नॉट ओपनिंग एचओ अकाउंट. रिटर्न्स ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में. ओपनिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक के डेबिट में. On this opposite side loading, but opposite side of same account, no sir, here branch adjustment account we are going to open. So debtors method exactly opposite side, branch adjustment opposite side but different account. Okay, cash sales, cash account debit to sales. Sales will be transferred to branch stock. Cash account is not open because daily cash is set. क्रेडिट सेल्स डेटर्स के डेबिट में एंड स्टॉक के क्रेडिट में. सेल्स विल बी ट्रांसफर टू ब्रांच स्टॉक. ब्रांच स्टॉक इज लाइक ट्रेडिंग अकाउंट. डेटर्स ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. कैश अकाउंट इज नॉट ओपन बिकॉज डेली कैश इज रेमिटेड. ओनली डेटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. सर P&L च्या डेबिटला, डेटर्सच्या क्रेडिटला. P&L के डेबिट में, डेटर्स के क्रेडिट में. सेम इफेक्ट. सेल्स रिटर्न ब्रांच स्टॉक में से, सेल्स में से माइनस, डेटर्स के क्रेडिट में. ब्रांच एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस टू एचओ. एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में. एचओ अकाउंट इज नॉट ओपन. ऑल थ्री. क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में. लोडिंग कैंसल branch adjustment में and over. Then we will close branch stock account. Balancing figure excess selling price over invoice price. Branch adjustment को credit किया. GP is in branch adjustment account. Branch expense account you closed. Debtors account by balance carried down. Expenses transferred to P&L and P&L is like by GP from branch adjustment. Two expenses, two bad debts, two discount, two profit over. This is how you have to revise. See,
Revision is a miracle. Once you revise all these concepts, easy છે beta. Now easy. Now tell me, both methods are easy, sir? Yes or no? चलो चलो बोलो अभी बेटा. रिवीजन. रिवीजन की पावर बहुत अलग है. और बेटा रिवीजन किया ना तो ही सब याद आएगा. मुझे कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे आप लोगों के? सिर्फ 5 लोगों ने बोला इजी. मोनिका, कोमल, लोगा सुंदर, कृष्णा एंड तनीषा. अभी माइंड में दूसरी सोच थी या नहीं थी? अभी 100% फोकस था या नहीं था? टेल मी. दिस इज ऑलमोस्ट 8:40 from 1.5 hours. It's not simple beta that you are sitting on one place for 2.5 hours. Yes, it needs dedication. After 30 minutes I also can't sit if I don't like this session. यदि आपको मेरा सेशन पसंद है तो ही आप एक जगह पे बैठ सकते हो. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. 2.5 hours, वो भी आईसीयू लेक्चर्स इतने फास्ट वाले. तो फास्ट है तो मजा है. चलो, टुडे we'll give you some homework. Today's homework 2, 3, 4, 5. 2 तो हो गया. 3, 4, 5 एंड बेटा 7 नंबर. 3, 4, 5 and 7. Do this homework. 3, 4, 5 and 7. Today I'm going to tell you last concept, that is a foreign branch. Independent branch we'll do tomorrow. Independent branch हम लोग कल करेंगे. But today we have to finish with foreign branch. Foreign branch. आज पहले after the session you just recall both methods. Only 4 questions you solve for 2 times. That 4 questions, data, stock and debtors, for minimum 2 to 3 times. Data, stock and debtors. जब तक you can't solve it in 10 minutes. 10 to 12 minutes. Maximum time permitted 12 minutes. Okay. बेटा कांचन, bad debts you can route it through expense. अभी उन्होंने गलती किया होगा तो किया है. We can't help you. Okay, so you put it in branch P&L. ठीक है, आईसीआई ने भले वो ब्रांच एक्सपेंस में डाला, you put it in branch P&L as संकेत सर told you. ठीक है. Bhumika is saying, thank you sir for your explanation, for this explanation. Yesterday when I was doing question of branch, I was quite confused in both the methods. But I watched session again, understood clearly both concepts, and today this branch chapter is crystal clear. Thank you beta Bhumika. But see, you have to take your own efforts. Okay. अरे फ्री है ना, वापस देखो. नहीं समझा तो वापस देखो एक बार. फास्ट है, थोड़ा सा सर के साथ वापस देख लिया हो जाता है. बाद में नहीं होता रे, नहीं होता बाद में. ठीक है. चलो आज की लास्ट कॉन्सेप्ट, फॉरेन ब्रांच.
बेटा डाउट्स क्लास के लिए इन दिस मंथ वी रियली डू नॉट हैव टाइम, डाउट क्लास के लिए तो चलो फॉरेन ब्रांच पे आता हूं। यू नीड अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes, टेल मी, और शुड आई कंटिन्यू? You need a break of 5 minutes maximum because this is a fresh concept. चलो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। नहीं बेटा 30-45 मिनट्स ही बचे हैं। चलो ले लो, चलो 9:55 8:55 को मिलते हैं। वी विल मीट एट 8:55। चलो न्यू कॉन्सेप्ट है 8:55। मनीष
अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ऑपरेशंस। अभी हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ऑपरेशंस। चलो, एवरीवन इज रेडी बेटा? 100% फोकस रिक्वायर्ड बेटा। चलो, ओके। See, foreign operations are divided in two parts. Foreign branches. Now, why foreign branch? Logic is very simple. बेटा, संकेत सर का पॉपुलैरिटी सपोज इंडिया के बाहर होने लगा, so I want to extend my branches not only in the बेटा India, I want to extend it in the foreign. See, ICI also has popularity, so ICI, our centers are not only restricted to India, but it is also in बेटा foreign countries. सो दुबई में भी है, जैसे आपको पता ही है। सो फॉरेन कंट्री के साथ हमारा कोलैबोरेशन भी है ऑफ सीए कोर्स। नाउ कल मेरी क्लास है क्या नहीं है? एज पर शेड्यूल आई थिंक होनी चाहिए, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो फॉरेन ब्रांचेस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। एवरीवन नाउ फोकस, इंटीग्रल, integral and non-integral. Sir, why there are two concepts? Anything before understanding, why question to yourself, integral versus non-integral. Integral means just extension of your, sir, again dependent, but now the word is not dependent, it's integral. So integral is nothing but it's a dependent integral part of enterprise. ओके, इंटीग्रल मतलब क्या? उसी में समाया हुआ। नॉन इंटीग्रल मतलब बेटा इंडिपेंडेंट, इन सिंपल लैंग्वेज। इंटीग्रल पार्ट मींस sale of goods imported from the reporting enterprise. Okay, so reporting means what beta? Reporting matlab head office, reporting enterprise matlab head office, reporting enterprise means head office. And remittance, whatever sold in the foreign country will be beta remitted in India. That cash is remitted in India. So this is integral. And what is non-integral? It is independent. Independent means it has own finance, own production techniques, beta own production techniques in foreign currency out of resources which are available in such a country independent of reporting enterprise. So beta here there is no transfer of goods from head office to branch. Here branch will have own production process, independent, only name used for the purpose of beta name. Why beta? Samsung, see Samsung, it's a only a concept I'm explaining you. See, Korean company, but beta in India it has own manufacturing. When beta it is own manufacturing, it is non-integral. Understood the difference between integral and non-integral? Tell me it in the comment section, what is integral versus non-integral? चलो जल्दी से comment section में बता दीजिए। 6 को क्लास है। ठीक है, टुमारो वी डू नॉट हैव क्लास। 4, 5, 6 को है क्या? ठीक है, टुमारो क्यों नहीं है? व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन? पता नहीं। ठीक है, इजी है। चलो बेटा बोलो जल्दी से, फॉरेन ब्रांच व्हाट इज द डिफरेंस? वन थिंग यार, मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोगों का कि आप लोग ना आंसर्स ही नहीं देते हो। रुका हूं मैं आपके लिए। इंटीग्रल वर्सेस नॉन इंटीग्रल। कल क्लास शायद से कुछ त्योहार होगा,
Integral means dependent and non-integral means independent. Techniques. Now, how to convert? Techniques of translation. See, now your country, assume nahi beta, our country is India beta, our country is in, sorry, our head office is in India and our branch is in USA. So my own transactions are in rupees and my branch transactions are in dollars. ओके चलो एक बार लिख के बताता हूं भाई मेरा हेड ऑफिस किधर है माय हेड ऑफिस इज इन इंडिया क्या हुआ है इसको my head office is in India so my currency of transactions are rupees my branch is in USA is in dollars when I want combined profit then that will be in rupees my consolidated profit my combined profit consolidated combined rupees I will not convert in rupees because rupees to rupees mein hai but now question dollar has to be converted into rupees sir डॉलर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा conversion ratio that I have to consider because I want profit in rupees. Understood the concept? So now there is a need of translation. So see, techniques for translation. Translation means conversion. Conversion. So translation is very simple. Sir 31st March का रेट ले लो रेट sir I bought some goods on 1st of April some goods are bought on 30th June some goods are bought on 31st July so it's very difficult to apply closing rate over there so for nominal accounts so only 31st March rate are not preferable okay so all your accounts are divided in three parts your accounts are divided in three parts number one some are nominal accounts कुछ nominal accounts है कुछ बोलेंगे monetary items so monetary wait I will define it non-monetary nominal accounts monetary non-monetary nominal accounts monetary non-monetary nominal accounts monetary non-monetary nominal accounts focus nominal accounts monetary non-monetary sir monetary means monetary means balance sheet value is equal to today's value exact amount you will get so in balance sheet if it is $1,000 if you go outside it is $1,000 for example debtors will give you $1,000 sir but balance sheet value is not equal to realizable value or settlement value realizable means cash value today's value means realizable value realize means earning cash sir in my balance sheet debtors are showing $1,000 in actual also I have to receive $1,000 so this is monetary item sir my land is showing in balance sheet $200 sir historical cost I bought it 10 years back there is no revaluation and if I am going to sell it today I will take $1,000 beta
yesterday only my sister, beta, she visited India. Still, she's in India now. She bought one flat in USA at $1.1 million. As per Indian currency, बेटा मैं शॉक हो गया. मुझे तो ऐसा लगने लगा कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ लाइफ में. एज पर इंडियन करेंसी इट इज 8 CR. 8 CR का फ्लैट. ठीक है भाई, तुम भी लोगे सीए बनने के बाद, कोई दिक्कत नहीं. सो बट आफ्टर 1 year, नाउ बेटा इन इंडिया आवर इकोनॉमी इज गुड एक्चुअली, बट यूएस की इकोनॉमी हिल गई है. सो बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन वॉर वगैरह सब कुछ नड़ गया उनको. So it is not showing better same value. Now she wants to sell it off due to some reasons, personal reasons. Now she is getting only 7 crores. 1.1 million नहीं, 1 million के आसपास मिलेगा. So see the difference. 200 crores in balance sheet. Now in her balance sheet it is 1.1 million. But now today if she sells, she will get only 1 million. So balance sheet value and realizable value are different. Then beta it is called as non-monetary. एक बार हिंदी में बताता हूँ. अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे सर. अकाउंट्स कितने पार्ट में? देखो अपना क्या काम है, अपना क्या 31 मार्च को, अरे हमें कंबाइंड प्रॉफिट चाहिए. यूएस का मेरा ब्रांच है, हेड ऑफिस किधर है? इंडिया में. हेड ऑफिस है इंडिया में, यूएस में है मेरा ब्रांच. अभी इंडिया में मैं तो अपना इधर का हेड ऑफिस का प्रॉफिट तो रुपीज में होएगा सर, और ब्रांच का प्रॉफिट बेटा वो तो डॉलर्स में होएगा, वो तो उधर का है. अभी ब्रांच के आइटम जो है, अकाउंट्स आइटम्स, वो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे. कौन से 3 पार्ट्स? नॉमिनल अकाउंट्स, मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम. सर नॉमिनल अकाउंट्स मतलब क्या? नॉमिनल अकाउंट्स मतलब जो हमारे सेल परचेस एक्सपेंडिचर इनकम है उसका रेट अलग होएगा. मॉनिटरी मतलब क्या? आज मैं ये मेरे बैलेंस शीट में जितना दिख रहा है, डेटर, क्रेडिटर, कैश, ये सब क्या है? मॉनिटरी आइटम. जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वही लोग वो मुझे पैसा देने वाले हैं या मुझे वो सेटलमेंट में करना है. दैट इज मॉनिटरी. सर नॉन मॉनिटरी मतलब बैलेंस शीट में अलग दिख रहा है और आज मैं सेटलमेंट करने जाएगा तो अलग होएगा, या रियलाइजेबल बेचने जाऊंगा तो अलग होगा. सो उसको बोलेगा नॉन मॉनिटरी. सर इन्वेंटरी किस में आएगा? नॉन मॉनिटरी. याद रखो इन्वेंटरी भी किस में आएगा? नॉन मॉनिटरी. सर डेटर्स मॉनिटरी, सर क्रेडिटर्स मॉनिटरी. पर सर इन्वेंटरी को कौन सा रूल अप्लाई करना है वो बताता हूं. अभी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, सो 3 different rates we are going to use it now. Everyone is clear with the concept? अरे समझा क्या मेरे दोस्तों? Yes, everyone. So rates now I am going to tell you. चलो अभी रेट्स देखो. नॉमिनल अकाउंट्स एवरेज रेट, मॉनिटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनिटरी आइटम डेट ऑफ परचेस. सर डेट ऑफ परचेस देखो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल. यदि ये इसको हटवा देता हूं बेटा. ओके चलो आ जाइए. सर इधर है नॉमिनल अकाउंट, इधर देखो नॉमिनल अकाउंट है एवरेज रेट, मॉनिटरी क्लोजिंग, नॉन मॉनिटरी डेट ऑफ परचेस और इशू. एकदम सिंपल है. चलो वापस. सर नॉमिनल अकाउंट एवरेज, नॉमिनल अकाउंट एवरेज, मॉनिटरी क्लोजिंग, नॉन मॉनिटरी डेट ऑफ परचेस, नॉमिनल एवरेज, मॉनिटरी क्लोजिंग, नॉन मॉनिटरी एवरेज, नॉमिनल एवरेज, सॉरी डेट ऑफ परचेस था. हाँ,
नॉमिनल, एवरेज, मॉनिटरी, क्लोजिंग, नॉन मॉनिटरी, डेट ऑफ परचेस और इश्यू। चलो याद हो गया पूरा? सबको याद हुआ क्या? फटाफट बोलिए। एक स्क्रीनशॉट, चलो इधर से स्क्रीनशॉट लीजिए। 100 पेजेस के बुक में लिखना है, 100 पेजेस स्क्रीनशॉट। जो नहीं लिखेगा बेटा धोखा हो नहीं वाला है आपके साथ। You will be in trouble if you are not writing it in 100 pages book. And now, exchange difference. Why exchange difference? Beta, please write down this. I will tell you why there is exchange difference. ये बाद में बताता हूँ। Exchange difference P and L में आएगा सर। Exchange difference P and L में आएगा। Exchange difference P and L में आएगा सर। Non-integral. Tell me where is the difference? Where is the difference between these two? इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल में किधर डिफरेंस है बताओ? इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में किधर डिफरेंस है देखो, बताओ। देयर आर टू डिफरेंसेस। टेल मी वेयर यू आर फाइंडिंग दिस डिफरेंस। चलो बताओ। डिफरेंस बोलिए, डिफरेंस बोलिए, कहां पे है डिफरेंस बोलिए। यस बरकतुल्ला जी, आज गुरु मंत्र दूंगा बेटा। अभी मेरी तबीयत ठीक है तो आज आपको गुरु मंत्र मिल जाएगा। डोंट वरी, आज आपको गुरु मंत्र मिल जाएगा बरकतुल्ला जी। सर नॉन मॉनिटरी आइटम क्लोजिंग रेट है, इधर डिफरेंस है, इधर डिफरेंस है। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व डिफरेंस है। एक्सेप्शन, डेप्रिसिएशन, वो भी एक डिफरेंस है। एंड नॉन मॉनिटरी में डिफरेंस है। भूमिका बेन एकदम होशियार छो। डिफरेंस किधर है सर? तो नॉन मॉनिटरी में डिफरेंस है। बहुत बढ़िया बेटा। होईत ना काही होईत दिसाल तुम्ही विचारा आधी आता। चलो डिफरेंस समझ में आया? यस सर आया। क्लोजिंग रेट और इसमें डिफरेंस है। इलस्ट्रेशन 15, 16, 17 टीवाई के 10। चलिए आ जाइए इलस्ट्रेशन 15 में। इलस्ट्रेशन 15। वेरी इजी क्वेश्चन सर। इंटीग्रल ऑपरेशन। On 31st December 2002, the following balances are appeared.
नॉन मॉनिटरी में सिर्फ डिफरेंस था, नॉमिनल अकाउंट्स एवरेज रेट पे ही होता है। On 31st December 2002, the following balances appeared in the Chennai branch of an English firm having head office. Stock 2,34,000 on 1st Jan. भाई पानी दिया हो थोड़ा। Purchase and sales, it's opening rate बेटा। Purchase and sales average rate, debtors and creditors monetary item, monetary item बेटा closing rate, bills receivable payable monetary, exact amount we are aware, closing, salary rent nominal average, furniture bank, non-monetary, furniture is date of purchase, and bank account monetary closing rate. New York account beta see head office books branch has debit balance, and in branch books head office is always liability, so credit balance. Remember this technique. हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, and in branch books head office shows credit balance. So here we will consider inter unit rate. Inter unit rate means in head office book जो ब्रांच का बैलेंस दिखेगा, इन हेड ऑफिस बुक जो ब्रांच का बैलेंस दिखेगा उसको बोलेंगे इंटर यूनिट रेट। ठीक छे, इंटर यूनिट रेट इंटर यूनिट रेट ये याद रखना है। बस so inter unit rate we are going to consider over here. Now see, head office is in New York and branch is in India, तो रुपीस से कन्वर्ट करना है डॉलर में, रुपीस से कन्वर्ट करना है डॉलर में, बट ऑब्वियस $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज होता है, सो हियर वी हैव टू डिवाइड, आंसर रिड्यूस होगा ना डॉलर में, सो डॉलर में आंसर कम होगा इसलिए हमें डिवाइड करना है। नाउ ओपनिंग रेट, ओपनिंग रेट, हाँ ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स, न्यूयॉर्क बुक्स branch account is showing debit balance of 13,400. So here directly given $13,400, $13,400 directly given, and furniture in head office books 1750, furniture $1750. Rate of exchange 2001 52, 2002, this is opening rate,
This is closing rate and average rate is given 50. So opening 52, average 50, closing 51. 51, 50, 51. ठीक है. So 2,34,000 divided by 52. It is 4,500. 31,250. 23,43,750 divided by 50. It is 46,875. 7,65,000 divided by 51. 15,000. 5,10,000 divided by 51. अरे इसको क्या कैलकुलेट कर रहे हो? 10,000. 2,04,000 divided by 51. 4,000. Then 3,570. 2,000. 2,125. 1,1,150. See the total. 4,500, 31,250 plus 15,000 plus 4,000 plus 2,000 plus 2,125 plus 1,750 plus 1,117. 71,775. 73,845. 2070. 2070. कुछ गड़बड़ हुआ है क्या रे? 4,500, 31,250, 46,875, 15,000, 10,000, 4,3,570. इधर गड़बड़ हुआ, सॉरी, इधर गड़बड़ हुआ है. $51 है ना? इधर 178,500 divided by 51. 3,500. 3,500 इधर हुआ. Then 2,000, 2,125, 1,750, 11,150, 13,400. एक गड़बड़ हुआ था. And exchange difference is a balancing figure. 2,000 and 73,775. And from trial balance beta, now it's very simple. Opening stock trading account debit side, purchases trading debit, P&L sales trading credit, debtors asset side, creditors liability side, bills receivable asset, bills payable liability, salary and rate P&L debit, furniture asset, bank asset, New York account liability side, New York account liability side, and net profit you will add over here. Net profit उसमें add होएगा. And see this difference
You will show it in not foreign currency translation reserve, P&L debit. ये किधर आएगा? P&L debit. देखो, P&L debit. Okay. If it is integral, P&L debit. If it is non-integral, तो आपने डायरेक्टली इधर लिखा रहता FCTR, liability side. So P&L debit में लिखना है या FCTR में लिखना है तो FCTR में. You got this concept? Easy था. P&L में कब लिखेंगे? इंटीग्रल. एंड नॉन इंटीग्रल होगा तो डायरेक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस. डायरेक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस. यस बेटा, डायरेक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में. सी व्हाट इज द लॉजिक? इंटीग्रल means dependent. Logic I am telling you, no one is going to tell you logic of this. Integral is dependent. Correct hai? So HO and branch profits are together. So branch ka loss or profit is ultimately considered it in P&L because it's a dependent. तो दक्ष जो भी पैसा कमाएगा वो मेरे पास दे देगा up to 18. Up to 18, Daksh will earn whatever he earned, beta, he will give it to me. But in case of non-integral, that is independent, loss or profit is also independent. So we cannot add it in P&L. So Daksh after 18, now he is independent. He won't ask me and Mona ma'am. Now his money are different, our money beta are different. So his translation we will adjust it in FCTR account. किधर adjust होएगा? FCTR, foreign currency translation reserve, and it is separate line item in reserves and surplus. Reserves and surplus में separate line item होगा. P&L combined, P&L directly expenditure or income. So his expenditure loss, that balancing figure, I will treat it as a loss if it is in P&L debit. If it is credit, my gain. Exchange difference is in debit, loss. Exchange difference is in balancing figure is in credit, profit. Understood the concept? So what is new here? एकदम easy है. So can you do for 16, 17? बेटा 16, 17 कर लोगे खुद से? All for, yes बेटा, and tell me difficult one in the next session. तो difficult जो भी होएगा वो मुझे next session में बताओ. 16, 17. So this is foreign operation. One more favorite question for theory. Theory के लिए 100 pages के बुक में लिखना है. Sir, what are indicators of non-integral operation? 4 marks question. Control by reporting enterprise. So suppose if there is no control, so beta, this is independent. Transaction with reporting enterprise, that is head office. Reporting enterprise means head office, are not high in proportion. Means more transactions is with foreign countries. Activity of finance from their local borrowings. मतलब US के ही local borrowings से लेंगे. So they are not dependent on finance also. Independent. So third one is finance. Second one is transactions. Third one is finance. Fourth one, foreign operation sales other than reporting currency. मतलब sales is not to Indian country. Sales is also their local sales. Sales means everything beta independent in simple language.
expenses also in their local currency. Day-to-day cash flows, local enterprise. Sale prices are not affected due to exchange rate difference. Sales prices not affected, and active sales market for their product. So beta, they are totally independent. They are totally independent. So 4 marks question. Last day revision. 100 pages के बुक में ये लिखना है. 100 pages के बुक में in simple language you can write it. One more question. One more 4 marks question. See, last question हो गया. Change in the classification. Previously, beta, it was integral. Now they want to transfer it to non-integral. इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल हो गया. एक्सचेंज नाउ नॉन इंटीग्रल है ना, तो अब तक क्या था? हाँ, अभी आगे जाएगा. इधर था पी एंड एल में, अभी आगे जाएगा एफसीटीआर में. तो एफसीटीआर एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट is accumulated in FCTR account. किधर accumulate होगा? FCTR में. तो जिस दिन वो शिफ्ट हो जाएगा from integral to non-integral, you will transfer exchange difference on date of reclassification. On date of reclassification in FCTR. And non-integral to integral, P and L. Exchange difference, foreign currency translation reserve is not to be recognized in income and expenditure till disposal. So till disposal, that balance will continue. So FCTR का balance will continue even if operation becomes integral. Means on the date of reclassification. तो जो भी balance FCTR में था, जो भी balance was in FCTR will continue, and next balance will be in P&L. So FCTR continues, and here FCTR is going to start ऊपर. So ये question भी 4 marks के लिए है. Favorite question. Integral to non-integral and non-integral to integral. 100 pages book. 100 pages book. Over. So beta, this was the last question of the day. I hope you understood it. Tomorrow you have holiday as per schedule. I don't know exactly. I will check it out. And yes, beta, we will start our session on Thursday. Okay. Do 16, 17. Take care of your health. Beta, and we will meet on Thursday. Chalo. Take a rest and take a break of 2 days. और पढ़ाई करते रहो अच्छे से. Okay. Thank you. Bye.